Hello students, one more problem for NEET students, expected question for the NEET students, and the question is on projectile motion, right? So what is the question? The question is what is the change in momentum when the body hits the ground? तो आप यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं ग्राउंड से और इसको वेलोसिटी आप दे रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड at an angle of theta. Let the theta be okay 30 degrees. With the horizontal, and finally the body goes and hits the ground, right? First of all, you must know the angle at which it is launched from some point. It will hit the ground, the angle with which it hits the ground will be the same as this. In symmetrical case, when the projectile is considered to be in this space and the space is is assumed to be where there is no air resistance is neglected, right? What we have to find, what's the change in momentum from here to here. Of course, when you resolve this velocity to two components, u cos theta and u sin theta, so ये जो u cos theta component of the velocity है, it will not change. Why? Because acceleration due to gravity is vertically downwards. ay is equal to minus g. तो ये वाला horizontal component जो acceleration का है ax, that is 0. तो इसलिए जो फॉरवर्ड एक्सेलरेशन है वो जीरो है, इसलिए ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगा, और अगर चेंज होगा वो होगा वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी. सो इस u sin थीटा और u का इस वेलोसिटी में, चलो अगर आप इसको uy कहोगे, इट इज ओके, इट इज vy, it is ux is the same forward velocity. Vy will be changing because there is vertical acceleration. तो कितना होगा? सिमिट्री की वजह से ये जो vy है it will be minus u sin theta. It will be u sin theta. अब माइनस लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हमने पहले ही डायरेक्शन दिखाया वर्टिकली डाउनवर्ड्स. So the velocity, vertical velocity will change. Initial vertical velocity is u sin theta. Final vertical velocity is also u sin theta, but in the opposite direction. So what is the change in momentum? So for that we have to find what is the initial momentum. Momentum here, initial point. Let me suppose that is p1. That is m u vector. ऐसे. तो इसको अगर कंपोनेंट में बनाएंगे, that is m u cos theta I component I unit vector plus u sin theta j unit vector. इसके दो पीसेस है, एक ये और दूसरा ये, और ये रिजॉल्व हो गया. तो ये u cos theta I डायरेक्शन में है और u sin theta j डायरेक्शन में है. अच्छा, तो और p1 इक्वल टू दैट इज m u cos theta I plus mu sin theta j, right? This is the initial momentum with which you launch the body into this space. What is the final momentum? P2. When it hits the ground, it will be okay, u vector dash कर दो इसको. So it will be m. What is u vector dash? That is u cos theta I, the same as this forward velocity to be the same as this because this velocity will not change, minus u sin theta j. This velocity is vertical, it will change from here to here, लेकिन जो horizontal velocity है that will remain constant, that will remain the same because there is no horizontal acceleration. Acceleration in the forward direction will not change because इस direction का जो acceleration है वो zero है, क्योंकि acceleration जो है vertically downwards है towards the center of the earth. So it will be P2 equal to, that is mu
cos theta I minus mu sin theta j. Now what is the change in momentum? The change in momentum can be found as change in momentum. सीधे इन दो मोमेंटा का चेंज निकालना है. कैसे? डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू P2 माइनस P1. सीधी सीधी बात. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंट. The momentum when it hits the ground minus the momentum with which it is launched into the space. So कैसे लिखेंगे ये? शाबाश. What is P2? That is mu cos theta I minus mu sin theta j माइनस करके P1, that is mu cos theta I plus mu sin theta j. सीधे सीधे हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया. थोड़ा सा हमें इसको करना पड़ेगा सिंप्लीफाई. तो कैसे किया जा सकता है? इट इज mu cos theta I minus mu sin theta j minus mu cos theta I minus, इसको अंदर लेकर के mu sin theta j. ये दो कैंसिल हो गए. तो व्हाट इज डेल्टा पी? दैट इज minus 2mu sin theta j. दिस इज द आंसर. मगर ये देख लो कि जो चेंज इन मोमेंटम का जो डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट टू द y एक्सिस. नेगेटिव मीन्स अपोजिट, j मीन्स y एक्सिस, सो इट इज अपोजिट टू द y एक्सिस. सो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड से. वो कैसे पता चलता है आपको? इस नेगेटिव साइन से और इस j से. सो दैट इज minus 2. व्हाट इज m? दैट इज 5. Mass, what is u? That is 20. Sin theta, sin 30 j. Sin 30 और 2 को कैंसिल करो क्योंकि sin 30 मीन्स 1/2, उसके साथ खत्म हो जाएगा. इज इक्वल टू माइनस 100. 20 into 5 is 100 j. अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? डेल्टा पी जो है इसका मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए, मैग्नीट्यूड में ये नेगेटिव भी खत्म होगा और जे भी खत्म होगा, बिकॉज दीज आर द टू विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन. तो इट विल बी 100 kg मीटर पर सेकेंड. दैट इज द यूनिट. दैट इज ऑल. और अगर आप उसको एक ही मिनट में करना चाहेंगे, इसका एक ही मिनट में कर सकते हो. वर्टिकल मोमेंटम जो है दैट इज mu sin थीटा. यहां वर्टिकल मोमेंटम है माइनस mu sin थीटा. इन्हीं को सब्ट्रैक्ट करके आपको मिल जाएगा क्योंकि इस मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ. सो दिस मोमेंटम, वर्टिकली डाउनवर्ड मोमेंटम माइनस दिस मोमेंटम विल गिव यू द आंसर. वो भी बहुत सिंपल होगा बिकॉज y मोमेंटम इज चेंज इन मोमेंटम. अगर ऐसे लिखोगे दैट इज y मोमेंटम इज माइनस mu sin थीटा minus what momentum? Initial vertical momentum, that is mu sin theta. That is again minus 2 mu sin theta. मगर मैग्नीट्यूड. ठीक, तो आंसर आपको यही मिला. तो ये जनरल प्रोसीजर है. और अगर आप शॉर्टकट करना चाहते हैं उसमें आपको यही सोचना होगा कि जो वर्टिकल मूवमेंट ही चेंज होगा. So you have to find the difference of two vertical momenta, y direction momenta. X direction momentum में कोई फर्क ही नहीं आया. There's no change in the momentum in the x direction. So you have to subtract this from this. You have to subtract this vertical momentum from this vertical momentum and you will get the answer. And if you like this lecture, you can subscribe and ask others also to subscribe and watch my lectures, because every day I am uploading these lectures just for the benefit of students. And it is a most expected question for the NEET 2025, because these are the questions which are generally asked at NEET. And IIT level is a little different. And when I upload IIT questions, उनका जरा जो लेवल होता है वो थोड़ा सा हायर होता है. थैंक यू.